सारा अभी तक? Now this is leadership. I'm in the mood to start talking. Okay, so thank you very much. Okay, I want to talk about something that is not that with the blessings of Kanti and Lata Gala and the entire BWW system, that is going to create a revolution in your business. Now we always say that this function is going to be life changing, and usually it is for a few people. Somebody makes a decision to go diamond or something happens. But what I am about to talk to you about is so powerful that if you adopt and if you understand and you apply it, it will revolutionize everybody's business here. Okay, it is something that is very cutting edge. It's a lot of common sense, first of all, because the first thing when you hear me talk will be that why didn't we do this earlier? And also I want to caution you, you will have questions. It is a learning process. So I'm going to just talk about the mindset today of why we are doing what we are doing, purpose of what we are doing. This is the background. Generally, I was thinking how to explain it the best way. See, what traditionally in the history of network marketing, if you look at network marketing itself, people generally recruit people quickly. You know, tell them the very minimum and sign them up. Yes? We don't like to, I don't, at least I personally have never been deceptive or misleading about this business, but the idea was get them in quickly and then educate them. Okay? At least try to educate them. And we all know that if we, doing that has worked. Of course, it worked for a while, it worked in the 90s, but now we live in the information age. Everybody can Google everything, and there is a lot of other companies out there. So we have to change strategies. Okay? लोगों को हम हमेशा we always सोचे कि sign up करके फिर educate करते हैं लोगों को. इसमें problem क्या है? What is the problem in educating people after you sign them up? Is that we didn't have a framework. Because we just kind of, you know, जब BBS आता है तो उनको बोलते हैं कि BBS आ जाओ, you know, फिर function के टाइम बोलते हैं function आ जाओ, then you are promoting the products, then you are doing it in bits and pieces, and a lot of people slip through the cracks. जब थोड़ा थोड़ा करके हम बोलते हैं लोगों को साइन अप करने के बाद कि आप फंक्शन में आओ या प्रोडक्ट के बारे में FPO करो, FPO2 करो, फिर महीने में कुछ न करना है, वॉल्यूम करना है आपको, एंड डुप्लीकेशन प्लान दिखाना है, एक बिट्स एंड पीसेस, और फंक्शन का आया तो फंक्शन के बारे में बोलते हैं उसी टाइम पे. तो हमारा ये है कि हमने सिर्फ थोड़ा स्विच किया उसको कि पहले से लोगों को एजुकेट करो. व्हाई डोंट वी स्टार्ट एजुकेटिंग पीपल बिफोर एंड प्रिपेयरिंग देम फॉर दिस बिजनेस, एंड दैट इज हाउ यू डिफरेंशिएट योरसेल्फ फ्रॉम अदर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज. रादर देन रिक्रूटिंग सेलिंग, उनको वो क्वालिफाई करते हैं हम लोग. वी क्वालिफाई देम. पहले से ये देखते हैं कि उनको पहले एजुकेट करो, पहले देखो कि उनका बेसिक एटीट्यूड है कि नहीं, बेसिक जो बोलते हैं फिटिंग, क्या वो हमारे टीम में फिट कर रहे हैं. विल दे फिट इनटू ब्रिट वर्ल्ड वाइड? विल दे फिट इनटू आवर वे ऑफ बिल्डिंग द बिजनेस? विल दे फिट इनटू नेटवर्क मार्केटिंग? ये है थॉट प्रोसेस. दैट इज द थॉट प्रोसेस ऑफ गेटिंग देम फ्रॉम into the business. So इसमें क्या है कि instead of sponsoring everybody and anybody and then hoping somebody will do something, we tell them beforehand what it takes. ये process का जो purpose है ना, these are the purposes. Prospect को हम prospect या candidate बोलते हैं. We are trying to, अभी ज़्यादातर लोग, most people who come into this business are employees, correct? Employees, yes? तो उनके लैंग्वेज में उनको क्या समझ में आएगा जिसके थ्रू, how can we teach them in their own language, जो employment language they have, how can we teach them how to move from the employee thinking to business thinking, E quadrant to B quadrant. किन्होंने यहाँ पे बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी रॉबर्ट कियोसाकी का बुक्स किन्होंने पढ़ा है ना? ओके, एक बार चलेगा नहीं, आप 10 बार पढ़ो उसे. अगर जितना ज्यादा आप पढ़ोगे, how many, the more you read that book, if you have read the book
10 times at least, then you will really be able to really get into this process. Okay? In general, I believe that that is the weakest link in leadership development and business. People don't read well. ठीक से पढ़ते नहीं है लोग books. Seriously नहीं लेते हैं. जब when people don't, you know how I know? Because everything is about your story, your words. If you are not reading properly, then nothing good comes out of your mouth. Nothing attractive comes out of your mouth, and you can't pull people. How many of you are willing to admit here that you are not reading properly? देखो, honesty, be honest, come on. आप लोग में से कई लोग यहाँ कौन है यहाँ पे जो एडमिट कर सकते हो कि आप ठीक से बुक पढ़ते नहीं हो, एकदम डीपली नहीं पढ़ते हो, ओके, एकदम स्टडी नहीं करते हो. बिगेस्ट लीडर्स जब आप देखते हो जिनको देख के आप इंप्रेस होते हो, यू लुक एट सम लीडर्स, यू गेट वेरी वेरी इंप्रेस्ड. इट इज बिकॉज दे रियली स्टडी द बुक्स एंड दे आर गुड स्टोरी टेलर्स. ओके, तो योर फर्स्ट टास्क इज, वो जो बुक है, मेरे को पता है, मैं ऑथर होने के बाद मेरे को पता चला कि जो एंड आप देखना हट है, लोग खरीद तो लेते हैं लेकिन डीपली पढ़ते नहीं है. मेरे को थोड़ा दर्द हुआ उससे, फिर ही पता चला कि कोई भी बुक पढ़ते नहीं है ठीक से. So you have to understand the principles in that book properly. अगर नहीं है, नहीं पढ़ोगे वो बुक को ठीक तरह से, 10 बार नहीं पढ़ोगे, notes, if you don't take down notes and you don't read it 10 times, you will keep asking stupid questions to your upline. Stupid. And it will keep you broke and left behind. And you will be, see, the process जो है, इसके advantage ये है कि you are in control, you are the decision maker, whether who gets in, who doesn't get in, and you will not be running. If you listen to me carefully, you will not have end of the month pressure. Amongst other advantages, मैं आपको बताता हूँ, जो candidate prospect है उनका advantage क्या है. We take them through steps so we can determine if they are a good fit. Okay, ये सबको समझ में आना चाहिए यार, come on. If they are coachable, and if they have the right attitude to receive mentorship. हम ये देख रहे हैं कि नए जो लोग जिनसे हम बात कर रहे हैं वो हमारे टीम में फिट होंगे कि नहीं, क्या वो टीचेबल हैं, क्या वो सीखने के लिए तैयार है, और उनका एटीट्यूड मेंटरशिप के लिए फिट हो रहा है कि नहीं. सेकंड, उनके साथ हम साइन अप करने से पहले फुल एंड ऑनेस्ट, we are honest and upright with them about what it takes to build the business. पहले से ही हम उनको बता देते हैं साइन अप के पहले कि ये बिजनेस शॉर्ट टर्म नहीं है, पैसा देखने के लिए एवरेज 4-5 साल लगेगा, और उसके लिए what is the point I'm missing here? उसके लिए क्या लगेगा, what all will it take to build a big business, पहले से हम बता देते हैं. We are honest about them. Okay, and there are steps. ऐसे नहीं कि पहले ही मीटिंग में सब बताओगे, इसमें 7 स्टेप है. Okay, we are teaching them, we are not just talking about what the business is and how the business is, we are talking about who and why. आप सोचिए ना, जब हमारे बच्चे किसी के घर जाते हैं, बोलते हैं, हमारी बेटियां बोलती है, कोई तो कभी कभी बोलती है दोस्त के पास जाना है, सहेली के घर में जाना है, किसी के घर में जाना है, you know, I want to spend the night there. The first question we ask is whose house. ये नहीं पूछते कि क्या करने वाले हो, whose house. और नाम बताते ही हम बोलते चलो ठीक है, कौन है, पहचान वाले हैं, ये है. और उसके बाद पूछते हैं क्यों जा रहे हो उधर, बाकी की सब डिटेल्स हैं. ओके, सो who and why is always more important. तो इसमें हम, जैसे मैंने वेलकम टॉक में बोला था, कांति के साथ, डॉक्टर ब्रज के साथ यहाँ आए थे, हम वी आर वेरी पुअर एट मार्केटिंग द होल पैकेज. इसमें सिर्फ ऑफ कोर्स प्रोडक्ट के बगैर तो बिजनेस है ही नहीं, राइट. प्रोडक्ट इज द ऑक्सीजन ऑफ द बिजनेस, बट सिर्फ ऑक्सीजन से आदमी जी नहीं सकता ना, और कुछ भी चाहिए ना, राइट. ऑक्सीजन इज द एसेंस ऑफ द बिजनेस, यू डोंट थिंक अबाउट इट. ओके, but if you ask somebody what is the secret of your happiness, you know, why do you have such a good family, वो थोड़ी ना बोलता ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के बगैर फैमिली नहीं हो सकता है.
लेकिन वो थोड़ी ना बोलते हैं ऑक्सीजन के कारण हम लोग, मेरा फैमिली यूनाइटेड है। क्यों यूनाइटेड होते हैं फैमिली? वैल्यूज, राइट? और क्या? रिलेशनशिप, लव, रिस्पेक्ट, दैट्स व्हाई, राइट? सो वी आर द बेस्ट पैकेज बॉस। ये जो आपको कभी कभी क्या होता है कि यू आर सो क्लोज टू द ट्रीज, यू डोंट सी द फॉरेस्ट, you don't even realize what you're receiving here and what you can give other people. You're getting a whole package, you're getting personal development. इसलिए मैं बोल रहा हूं पर्सनल डेवलपमेंट के 9 कोर स्टेप्स है, सब करो। अगर बुक पढ़ोगे तो यू लर्न अबाउट एथिक्स एंड मोरालिटी एंड वैल्यूज ऑफ बिल्डिंग द बिजनेस, listening to streaming properly and passionately, CDs and smart touch, okay, investing in as much as possible, सिर्फ स्टैंडिंग ऑर्डर नहीं, ओके। सो ये सब जो इंटेंजिबल्स हैं, हम लोगों को मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं, ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जहां रिलेशनशिप प्रॉस्पर होता है, लोग आते हैं। ऐसा नेटवर्क कहां मिलेगा आपको? पावरफुल नेटवर्क ऑफ पीपल हु सपोर्ट यू, कहां मिलेगा? लेकिन हम सोचते नहीं है ये सब। हमारा खुद का सेल्फ इमेज बढ़ाना है, इसलिए बिल गेट्स ने सिर्फ सेल्फ इमेज सिखाया। अगर मेरा, जैसे मिसेस ब्रैस ने बोला, इफ यू डोंट लव योरसेल्फ यू कांट लव अदर पीपल, ओके। वी हैव टू बिल्ड आवर सेल्फ। अगर मेरा सेल्फ इमेज हाई है तो मैं मेरे टाइम पे ऊपर वैल्यू रखता हूं। इफ माय सेल्फ इमेज इज हाई, आई वैल्यू माय टाइम एंड आई वैल्यू माय जजमेंट एंड आई से मैन दिस इज अनबिलीवेबल वेयर आई एम सिटिंग। ये जो है हम मार्केट नहीं करते हैं, लोगों को हर तरह की सिचुएशन में हम हेल्प करते हैं। ये बिजनेस में आने के बाद फैमिली की तरह, ओके, बट वी डोंट मार्केट इट प्रॉपरली। हम सिर्फ जाके डेमो दिखाते हैं बस, और फिर सोचते हैं अच्छा इसको फंक्शन में कैसे भी लाना है, वहां आके कुछ समझ जाएंगे। लेकिन हम उसको फ्लिप कर रहे हैं, पहले से बता रहे हैं, ओके। वी आर टीचिंग देम हाउ टू ऑनर द पार्टनरशिप। साइन अप के लिए कितना कॉस्ट है? 0, ओके। लेकिन हम यही बोल रहे हैं कि समझा रहे हैं उनको कि अगर आपको 0 करना है तो शुरू मत करो बिजनेस। फायदा क्या है? हम फोर्स नहीं कर रहे हैं, सिर्फ रीजनेबली एक्सप्लेन कर रहे हैं उनको कि वो ड्यूप्लीकेशन का बिजनेस है। अगर आप 10 पीवी करोगे तो 10,000 पीवी के लिए कितने लोग चाहिए आपको? 1000 लोग। अगर आप 1000 पीवी करोगे तो 10 लोग चाहिए। दोनों एक्सट्रीम है, दोनों नहीं कर सकते आप। जॉब भी है, ये भी है, 1000 कैसे करोगे? और 10 पीवी करोगे तो 300 साल लगेगा। तो हम समझाते हैं कि ऑप्टिमम नंबर है 200, जो सब लोग करते हैं, जो कोर है बिजनेस में। तो ये हम आपको सिखाएंगे। तो अगर आप हमारा टाइम वैल्यू करते हो तो आप शायद 50 पीवी से शुरू करेंगे, लेकिन आपको 200 तक लाना है। 200 के बाद आपके ऊपर है, वो भी कब? 7 तारीख के पहले। अल्टीमेट गोल। फोर्स नहीं कर रहे हैं, समझा रहे हैं, ओके। और हम ये भी बोलते हैं कि कल सिखाएंगे ये स्टेप्स। कभी क्या बोलते हैं ये मैं कल बताऊंगा। मैं एटीट्यूड दिखा रहा हूं आपको, बोल रहा हूं। जैसे बिट वर्ल्ड वाइड के सारे सब्सक्रिप्शन है, हम तो फोर्स नहीं कर सकते किसी को, ऑप्शनल है ना सब। लेकिन मैं क्या, मेरा स्टोरी बताता हूं मैं। मेरी स्टोरी, मेरा स्टोरी, मेरी स्टोरी। स्टोरी लड़की है, चलो ठीक है। मैं मेरी स्टोरी बताता हूं उनको कि मैं आपको ये बताता हूं कि मैंने ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम क्यों अडॉप्ट किया, पूरा सब्सक्रिप्शन क्यों मेरे लिए। क्योंकि अगर सिस्टम नहीं है तो ये ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है बिजनेस का। समझो कि मैं मुंबई में हूं, मेरा भाई दिल्ली में है, और दिल्ली में अगर उसको स्टार्ट करना है मेरे को, अगर दिल्ली में सिस्टम नहीं है तो मेरे को प्लेन में या ट्रेन में आना पड़ेगा, वैसे भी आना पड़ेगा। लेकिन अगर सिस्टम है तो वीकेंड में 1-2 बार आके उसको प्लग इन कर सकते हैं। अगर सिस्टम नहीं है तो हर वीक आना पड़ेगा मेरे को, कितना पैसा लगेगा उसका। और अगर दिल्ली का मेरा जो भाई है उसने किसी डॉक्टर को स्पॉन्सर किया और मेरे पास स्ट्रीमिंग नहीं है जिसमें मैं किसी और डॉक्टर का टॉक उसको सुना सकूं, तो मैं क्या करूंगा? मेरे को वो अलादीन की जीनी की तरह सब कुछ मेरे को बनना पड़ेगा। एक दिन फार्मर, एक दिन डॉक्टर, नहीं होगा ना। इट विल बिकम अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन और डिसयूनाइटेड हो जाएगा, ओके। मेरा टीम दिल्ली में है, आप दिल्ली में रहते हो, आपका छोटा सा टीम मुंबई में है, ओके। आप मुंबई आते हो, मेरे टीम पे नहीं आते हो, क्योंकि पहले तो आपको पता नहीं है,
कि मेरा मीटिंग चल रहा है, क्योंकि सिस्टम नहीं है। और अगर पता भी चला तो आप समझ रहे हो कि आपको पता लगता है कि यू आर टीचिंग ईगल एंड आई एम टीचिंग वल्चर। If you are in Delhi and I am in Mumbai, what is the operating cost of the business if there is no system? If you are my brother in Delhi, I have to travel from Mumbai to Delhi. If there was a system, I'll come here a few times and then I'll plug you into the system. There is no system, I have to keep coming here and I have to play the role. I don't know how to motivate that doctor who joined in your group. How do I do it? There is no screaming. It will become horrendously expensive. And then I am going to Delhi to do a small meeting. You have a group in Mumbai. You're doing a meeting in Mumbai. I am teaching eagle. You're teaching vulture. And then what happens? It's a complete. And we have a unhealthy competition between us. So since it becomes so expensive, I said this makes sense. It reduces my operating cost, my streaming, my books, and association. That is how we get them signed up. Says it makes sense. How can I help you otherwise? If they say, or you just take the sales and marketing plan and you build it yourself. Nobody is telling you that you need to get this. I cannot help you effectively. What's wrong with that, right? If my responsibility is to train you, if I'm a tennis coach and you bring a, spoon to the court, I can't help you. You bring a cricket bat to the court, I can't help you. I say, you play your own tennis, boss. I'm going. If somebody says, I want to get in, but I don't want to do any products. Okay, I have every right to say, you want zero sign up, please go sign up with someone else. Not with me. Nobody can stop me, right? Nobody can stop me. That is not a violation of a rule. Correct? Okay. So, one more thing is we build an understanding and relationship with the candidate or the prospect over a period of time. मतलब if we meet somebody cold contact, किसी को cold contact meet कर रहे हैं, we meet them 6 times before if we make an offer to them to join, we meet them 6 times before that. That means by that time they are acquaintance. They are gone from C list to B list. If you meet somebody 6 times, come on, right? You know them better than you know some of your cousins, right? So they have gone from C list to B list. Okay. And during this process, you're also going to save yourself a lot of CDs. Because before they come to the board plan, you have qualified them. And you're going to give them CDs or whatever is relevant material only at that board plan. So you will not be wasting with all these other people. See, either you can spend this process 7 steps, it will take 3 weeks to get somebody qualified. You can either spend 3 weeks to get somebody qualified, or you can spend next 6 months where they will drive you crazy. 0 PV, 0 PV, 0 PV, 0 PV, 0 PV, 0 PV. And another name for the process is protect your batata vada. Protect your samosa, protect your bonda. Because these people come, they eat your food, they drink your coffee, they drink your chai, and they do 0 PV. We don't want 0 PV. We have done too much charity for too long. Hello? Do you agree with me? Okay. This is not 100% proof, but in the reason we changed, it took us a long time, by the way. 10 years the West Coast has been doing in US this, and we saw how they progressed. And Brit Worldwide team is a huge team. Kanti's team is huge. A big ship cannot turn suddenly. So we've been watching. Their numbers are great. The retention, listen to me, don't fall off your chairs, okay, those of you sitting on the chair. The retention is 85%. Before the retention was 15% and 85 was 0, 0, 0, 0, 0. Now it's 85%. Okay? I mean, I'll tell you, it is one of the most liberating things. With this other advantage, you will be able to talk to anybody without hesitation. Okay? So, and as you go along this process, every time you loan them something, we use the Business of the 21st Century book to loan them at some point because we want them to read it. Oh, really, Kumar? You're going to make them read? See, I resisted. Big time, okay? I fought this.
You want to make a prospect read a book? Yes. Because if I'm going to invest my life, boss, oh, but मैं book नहीं पढ़ता. अरे, you have useless subjects, history, geography, sorry, even chemistry. क्या 100 page book? See, if I tell them, look, this book changed my life. Maybe you are not reading these days, but you have read useless books in school, yes or no? That you don't use right now? You are telling me that you will not spend a few hours reading a book that could potentially change your life? Really? If he says no, then I have to say goodbye. See, the process puts you in a control. It is not even the book. We are not promoting the book. It's what's in the book, in the attitude. If you before you loan them the book, there is something called meet and greet one, first meeting, where you're asking them questions. Are you teachable? Are you coachable? ये सब मैं कल बताऊंगा. So if we are going to ask those questions and tell them about asset-based income, how it has changed my life, how it has changed so many lives. If I'm going to coach them and change the way you make money, so you can develop some kind of, income that can relieve the stress from your job, right? And give you control over your life. You're saying you will not read one book? Really? Well, I have to think twice. The whole thing about this process, the best negotiators in the world, number one quality, they are willing to walk away. If they don't give the right answers, if I don't get a good feeling. The thing about this process, if they come up with resist network marketing, it's very simple, guys. Many people, they generally go into the defensive mode. The guys say, no, it's chain. Then you'll say, no, it's not a pyramid. No. We don't do that. You know what we do? We say, great, good question. Let me ask you this. Let me ask you a question. For me to proceed, it's going to take me several meetings, okay, to see if you're a fit or not. For me to proceed from this point till the end, there's one condition. You will have to forget everything you know about network marketing. Wipe it out. For now, hold off till step number 6. Are you willing to do that? He says no. You shake his hand, leave. बहुत हो गया, boss. Yes? These people don't know what they're saying no to. Right? So we just say, very simple question, polite question. Are you willing to forget for some time? I am not willing to forget for some time. Really? Forget it then. Because what you know is wrong. End of story. I mean, does it look like I'm recruiting you? No, I'm interviewing you. So, wo to dekho, right? Okay. So every time we loan them something like a book or a CD, we go through it. Not just CD दे दिया कहीं बुला लिया. जब भी हम इस process में book या CD loan करते हैं, उसका when we meet them next, we go through. We are not rushing. These meetings are 30 minutes long. Okay? We are not rushing. We are ready to catch any question they have. Okay? So every time we learn something, we go through it. Which means you have to be thorough in your material. The CDs, the streaming you listen to, the books you listen to, the good news for many of you and the bad news for many of you is you cannot fake it anymore. If you are in the LOS and you are not tuned into the system, you will be out. Nobody is going to let you coach anybody. It's done. If you're a bottleneck in the middle, okay, you cannot survive in this, which is a great thing, which is what we want. We want productive people who are honest and sincere. Okay. We are teaching them, we are preparing them for this partnership between them and us. During the steps, we educate them about what if they were to do a traditional business. Steps के दौरान हम उनको समझाते हैं कि अगर वो traditional business कर रहे होते हैं तो कितना investment चाहिए होता है, कितना commitment चाहिए होता है. लोगों को business चाहिए जो low startup cost है, low operating cost है, home based है, international है, right? फिर no employees, no inventory, no warehouse, no office, and greater control of time and money, and great trips, सब चाहिए. ऐसा कैसा होएगा बॉस? और कुछ हो ही नहीं सकता है.
सेपरेट वर्ल्ड वाइड के सिवा कुछ हो ही नहीं सकता है यार बॉस। और क्या है? इफ देयर इज समथिंग एल्स यू टेल मी। ये सब चाहिए लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होना चाहिए। क्यों? प्रॉब्लम क्या है? कुछ मालूम तो नहीं है। आई मीन ये सब बोलते नहीं है लेकिन सोचते हैं। हम यही देखते हैं कि उसके पास पेशेंस है कि नहीं, कि शायद उसका इंफॉर्मेशन, अगर अभी लोग बोलते हैं क्या, अरे अगर मेरे को मेरे अपलाइन ने बुक दिया होता, ये किया होता, तो मैं शायद ये बिजनेस में नहीं होता। मैंने भी यही बोला। लेकिन इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ। इफ मणिपाल हैड बीन ट्रेन्ड प्रॉपरली, मणिपाल इज वेरी न्यू। जैसे मैं भी था नया, पहले नए नए प्लान दिखा, बट इसमें हम ट्रेनिंग देते हैं लोगों को। साइन अप करने के बाद भी एक प्रोसेस है कि हम जाके उसको नहीं बोलते मेरा लिस्ट दो, वो नहीं कर रहे हैं अभी। मैंने कभी किया ही नहीं बाय द वे। 25 साल में मेरा दूसरा प्रॉब्लम था कि प्रोसेस जब आया मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या बदल रहे हैं, क्योंकि मैं हमेशा ऐसा ही बिजनेस किया। लेकिन वो सिखाने में तकलीफ था क्योंकि हमारे पास फ्रेमवर्क नहीं था। ओके, सो अगर मणिपाल ने ऑफर किया होता, मेरे को बोला होता, कांति के साथ आए होते, थोड़ा प्रोसेस था ट्रेनिंग के बाद, इफ दे गॉट ट्रेन प्रॉपरली आई वुड हैव लिसनड। आई वुड हैव सेड बुक तो पढ़ूंगा, chances of financial chances of more control over time and money, okay अगर चांस भी है तो मैं तो पढ़ूंगा बुक। I would have read it. Okay, so whatever it is I will do it because I was skeptical but I was not stupid. Thank you very much. The other thing we do during the process, we address red flags and yellow flags right away. मतलब क्या है कि कोई बोलता है कि 2 हफ्ते में मेरे ग्रैंड मदर का ऑपरेशन है। अगर मेरे को पता चला तो मैं उधर ही रोक दूंगा प्रोसेस। पहले क्या बोलते थे, नहीं 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 डोंट वरी अबाउट इट, हम आपका ग्रैंड मदर का सर्जरी कर देंगे, हमारा डॉक्टर है, हम उनको संभाल लेंगे। वो टाइम में जब आप ग्रैंड मदर का सर्जरी, आपका बच्चे को भी हम बेबी सिटिंग करेंगे। हम बोलते अभी बोलेंगे बॉस 2 हफ्ते में अगर है तो ये दिस इज नॉट अ गुड टाइम, आप सर्जरी के बाद मेरे से बात करो। ओके, और या कोई छोटा बच्चा थी, मैं एक बार मीट एंड ग्रीट में पहले मीटिंग में देखा, एक बच्चा था, मैं वीडियो में देखा, मैंने बोला कि अगर ये प्रोसेस ठीक हुआ चौथे स्टेप तक, या कभी ना कभी तो मैं आपको मीटिंग में बुलाऊंगा, उस वक्त क्या आप आपके बच्चे के लिए कोई अरेंजमेंट कर सकते हैं कि नहीं? मैं एटीट्यूड देख रहा हूं क्या है। अगर वो बोले नहीं और वो चंद्रमुखी से ज्वालामुखी हो गई तो मैं बोलूंगा बस थैंक यू वेरी मच, नाइस टू मीट यू, यू आर नॉट रेडी राइट नाउ। हम उनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे, उनको ही उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने दो। अगर आपका एटीट्यूड ठीक है प्रोसेस में, आई टेल यू व्हाट विल हैपन, अगर आप प्रोसेस ठीक से करोगे तो लोग आके आपको थैंक करेंगे, बोलेंगे थैंक यू फॉर योर टाइम। ओपन मीटिंग में आके बोलेंगे आपको, ओपन के बाद आई एम सो ग्लैड आई क्वालिफाइड, थैंक यू। फॉलो थ्रू में किसी ने मेरे को पूछा अभी लास्ट सैटरडे कि have I qualified for the program? Have I qualified to earn your time? अभी मेरा पोस्चर तो अच्छा रहता है लेकिन ऐसा कभी 25 साल से किसी ने नहीं पूछा। ओके, अभी लोग पूछ रहे हैं, लोग वैल्यू कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सब एग्री करने के बाद जब हम टर्म्स बताते हैं उसके बाद ऐसा नहीं कि सब लोग सब कुछ करेंगे, लेकिन योर चांसेस विल बी हाई। इसमें क्या है कि साइन अप के पहले वो अग्री करता है अपने वॉलंटरीली कि वो एफपीओ करेगा 1 and 2, 1 and एफपीओ व्हाटएवर एंड देन वो ये भी कमिट कर रहा है कि हर महीने कुछ तो करेगा, नॉट एज अ कंपल्शन बट बिकॉज ऑफ कॉमन सेंस, राइट? कि 50 पीवी जो भी है पहले, बट इस गोल बहुत लोग 100 पीवी कर रहे हैं ऑलरेडी लॉन्च में, राइट अवे लॉन्च 100 पीवी दे कमिट पहले 7 तारीख तक 100 पीवी। ओके, इससे क्या होता है पता है? समझो आपके ग्रुप में 100 के बाद आपके कोर लोग जो आप में से कितने लोग यहाँ पे मिनिमम 200 पीवी करते हो महीने में? तो आपका पहला टास्क ये है, पहले आप ऑनर करो पार्टनरशिप। आप में से कितने लोग स्ट्रीमिंग में हैं, ये स्मार्ट टच में है? ओके, कितने लोग बुक ऑफ द मंथ में है? ओके, आप ऑनर करो, अपने ग्रुप में प्रमोट करो सबसे पहले। ओके, अगर 200 पीवी आप कर ही रहे हो, अगर 500 कर रहे हो तो भी ठीक है, लेकिन उसका 200 7 तारीख तक करो। क्यों नहीं कर सकते हो? अगर आप करोगे, समझो कि आपके ग्रुप में 50 लोग ऐसे हैं, बिफोर 7th of the month you will be 10,000 पीवी।
ये थियरी नहीं है बॉस, ये थियरी नहीं है। क्योंकि जो लॉन्च करते हैं ना लोग, उनको यही पता है बस कि अगर मेरे को बिजनेस बढ़ाना है तो ये सब करना है, वो और कुछ जानते नहीं है। तो उनका एक्सपेक्टेशन ये है कि जब वो साइन अप करेंगे तो लोग एग्री करेंगे। वो 3-4 महीने तक थ्रू, हम कभी किसी को ये नहीं बोलेंगे 200 पीवी खरीद के रखो। हम उनको समझाते हैं कि आपके बजट के ऊपर, हम बजट भी बोलते हैं, बजट के बारे में बात करते हैं कि बजट के ऊपर आप पहले ये डिसाइड करो कि 7 तारीख तक कितना कर सकते हो। अगर आपका बजट में सिर्फ 20 पीवी है तो हम बोलते हैं कि आपको 200 तक जाना है, मतलब 180 आपको बेचना है। आपको यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स दैट। उसके लिए एजुकेशन मिलेगा, ये मिलेगा, लेकिन वहां तक पहुंचना है आपको। क्यों? क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो 50 लोग नहीं करेंगे आपके ग्रुप में, अगर वो नहीं करेंगे तो आप 10,000 कैसे जाएंगे? तो वो समझते हैं लोग। सो अगर शुरू शुरू में 100 भी किया पर मंथ, उसने ऑलरेडी एग्री कर दिया है 7 तारीख तक करेगा। ऑनर, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, ये आंखों में आंखें डाल के वो बोल रहा है कि मैं करूंगा या करूंगी या हम करेंगे। गॉट इट? इसका मतलब ये नहीं कि आप 200 पे रुक जाओ, जो कर रहे हो करो, लेकिन जो उसका पहला जो 200 है पहले 7 तारीख के अंदर कर दो। ये प्रोस्टेट प्रॉब्लम की तरह 10 पीवी 20 पीवी क्यों करोगे? करने वाले हो एनीवे, डायरिया की तरह इधर थोड़ा उधर थोड़ा, क्या है? अगर बिजनेसमैन हो, सी बिजनेस माइंडसेट क्या होता है मालूम है? बिजनेस माइंड में ये नहीं सोचता है कि मेरे को क्या प्रोडक्ट चाहिए, ऐसा नहीं सोचता है। जो है हम लेंगे, जो मैं यूज कर सकता हूं यूज करूंगा, बाकी बेचूंगा या थोड़ा इन्वेंट्री रखूंगा सैंपल देने के लिए। दिस इज व्हाट अ बिजनेसमैन सेज। I sold the products, I bought the products, but I didn't care what the products were. Because it's just a means to an end. क्योंकि मेरे को रिजल्ट से मतलब है ना, ये बिजनेस है। हमको वी हैव टू बी ग्रेटफुल कि 50 लाख का इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट है, एसेट है वो। समझे ना? दैट इज अ माइंडसेट। तो ये माइंडसेट चाहिए लोगों को। यू लाइकिंग इट सो फार? ओके, सो वी एड्रेस रेड फ्लैग्स राइट अवे। Okay? For the IBOs get to sharpen their axe and become more productive. मैं बोल रहा हूं आपका प्रोडक्टिविटी इतना बढ़ेगा, इतना रिलीफ होगा आपको कि कॉन्टैक्ट के टाइम आप सिर्फ बिजनेस के बारे में नहीं बोल रहे हो, आप बोल रहे हो कि हमको कोच मिला है, हमको मेंटर मिला है। मैं यही बोलता हूं, मेरे आपको एक अपना स्टोरी बनाना है जो सच है। मेरी स्टोरी ये है कि मैं आई वॉज अ कंप्यूटर कंसल्टेंट। आई गॉट माई मास्टर्स डिग्री फ्रॉम ड्रेक्सिल यूनिवर्सिटी. And then I worked for a company called Capgemini America. And then when I got my green card, I started my own IT business. I placed 12 people in IT consulting, and I was making good money, but I had no time. I was frustrated Sunday nights because first I had one headache when I worked for someone. Now I have 13 headaches, 12 of theirs and one of mine. Right? And so, but I fortunately ran into this group of entrepreneurs who taught me how to think differently about money and how to create asset-based income. And I have been free since 1994. I have had control of time and money and didn't have to go to a 9-to-5 job because we make asset-based income. That is my story. आपका जो भी सच है, आप ये नहीं बोल सकते कि आप फ्री हो अगर फ्री नहीं हो। आप ये बोल सकते हो कि I am in the process. I met people that are coaching me, and I'm in the process of really getting some control over time and money and some alternative to a 9-to-5 job. As you know, there is no future in a job. How many of you agree there is no future in a job? There's no real future in a job. Everybody knows that, right? Okay, so this is called the story, right? So it gets us to sharpen our axe. It's easy to contact people this way because you're telling them the truth. Hello? You're not half sure of what you're saying. The process will unite the team in a big way. Brit Worldwide will be united like never before. See, your number of sign-ups might go down in the beginning because you are filtering people out in the front. But when the pipeline is full, when you start doing more and more appointments, then you'll see the thing take off. Okay? People are already made a verbal commitment of doing volume. They have made a verbal commitment of and you are watching, you are not making them do crazy volume, stupid volume. They should not be selling on Amazon or stocking somewhere or anything. That is your job. We want to be
get the best reputation. Reputation बुरा क्यों होता है network marketing में? क्योंकि some idiots push their downline. That's the stupidest thing you can do. That is like shooting your own kids. You know, make them push volume that buy volume that they should not buy. Okay? So हम सब सिखा रहे हैं. We are giving the right mindset. Okay? So it unites the team in a mighty, mighty way. It ensures that edification, powers, and cardinal rules are respected and honored because people are hearing the word coaching and mentorship. They expect impact, they expect character and integrity in the upline. Okay, which really some of you need to work on. Okay, it reduces crutch dependency on open meeting. There will be a lot more board plans. You will have home plans, but not in the new person's house. We'll get to that, later. That's why you have to ask a lot of questions. This will empower and create more leaders because you're doing things on your own. I never got a list from anybody in 25 years. I never told anybody brand new because I had a process, even though I didn't really have the framework to teach it. I never felt very comfortable asking a stranger for his list and talking to his brother when I know that I can make a good call, but as soon as I hang up, brother calls him. Finished. He's vanished. His house is gone, zip code is gone, his city is gone, everything is gone. I can't find him. I don't want to talk to your brother. You talk to your brother, I'll prepare you. Okay, that is the way I've always been. If it is done right, you'll have more productive IBOs. We already know that. And we'll have some real good growth. We already have evidence of it in the US. The process has to feel natural and right and not conjured up. This shouldn't feel like you're doing something fake. Because this is more natural. You're sitting and answering, you're talking to them for great length of time. You're answering the right questions at the right time when you decide. Okay? The quality will grow up. Because low quality people will not go past meet and greet one. They won't even know how to answer your questions. Okay. You're looking for what we call hash. Humble, appreciative, smart, and hungry people. Hash. The best thing about the process, you want to hear this? Good news for some of you, bad news for some of you. It will show you who you really are. It will show you who you really are. Many years ago, I heard a talk when somebody said, this business will cut you open. What the posture program, what this program, the process is not. It is not about posturing people. It is not about showing attitude to people. Okay? You are ready to walk away does not mean your goal is to walk away. Some people took it to the extreme, learning, they come back and say, I rejected 3 people today. That is not your goal. They think they should pick a fight with everybody. Okay? It's actually a very loving way to tell people the truth so you're not anxious. This is not about being arrogant or showing attitude to people. This is not mechanical steps. The steps should feel natural. Otherwise, you have not studied it properly. You have not read the book properly. You have not... See, this business has to get inside you now, really. And it has to do it fast because the otherwise process will not work. Because when people sign up, when they get into the business, there is also a post-launch training period where we make them listen to talks, where we make them do the FPOs, we make them read a little before they start talking to people. We make them practice their story. So we can say, yeah, you're ready to talk to your uncle. You can say this to your cousin. You can say this to your friend. Set it up and I'll come and do the meeting for you. You're preparing them. Okay. Now, but it's not just about steps. It should feel natural. This process is not an insulation from failure. You're going to fail. There is no quick, non-failure way to succeed. The only way to succeed is to learn how to fail and to learn from failure. But you will not, you'll be working with much better odds because people know. For example, when the function is coming up, you're not running to anybody's house and you don't even, suddenly you feel odd because people have already committed, they've already bought the tickets. You're not running at the last minute trying to convince people. When we all went on, in US we have this ditto delivery. I hope they come up with that in India too. And when the gala team implemented it in US on March 1st, that everybody will get on, we crashed the computer. That is how powerful it was. People that took whole month to qualify are qualifying on the first day now. Okay? First day. Yeah. This process is not bypassing the laws of success. You still have the laws of success, law of sowing and reaping. You sow before you reap after you sow, and you reap more than what you sow. Okay? It's not a magic wand, but it will put you in a position of strength.
When people quit, you will know exactly why they're quitting. They will know exactly why they're quitting. They will never say that you didn't tell me. Because in the launch, after you do the steps, you are actually telling them the estimated costs of what it takes to build a business. If you want to subscribe to this, how much? If you want to go to the function, how much? And then we teach them how to build their asset without going crazy or going into debt or anything like that. Okay? And so we are showing people that we care. Lastly, I just want to cover one more thing, guys. You're going to hear a lot about this. Is another mind shift. Many of you already know about it, but इसमें क्या है कि नया mindset ये है कि eagle plus and double eagle and ruby सबका goal होना चाहिए यहाँ पे. Everybody sitting here should have one goal. If you're not ruby yet, to go ruby. Okay, ruby is the new 10,000. Ruby is the new 10,000. Okay, ruby is a fantastic pin because you're very profitable. Ruby doesn't depend on somebody else going platinum. Ruby का ये advantage ये है, and double eagle ruby. Eagle plus double eagle ruby. This is what you want to do. Eagle is 6 legs, 6 partner legs. Eagle plus is 9 partner legs, and double eagle is 12 partner legs. Eagle plus double eagle ruby is your goal. Ruby is a great pin क्योंकि ruby का goal है आपको, तो कोई आपके downline में 9,000 PV में आके रुकता है, तो you don't worry because your goal is ruby. You are not going to, make him sell his children or something to get that 1,000 PV. Because your goal is ruby. आपका अगर एक qualified leg है अभी, तो आपका goal है कि उसके outside में ruby build करो. अगर आपका 2 qualified leg है, उसके outside में ruby build करो. I have never seen an unhappy ruby. अगर आपका 3 qualified leg उसके outside में ruby, आपका 6 qualified leg outside में ruby build करो. 20,000 PV. आप बहुत खुश रहोगे, बहुत पैसे बनाओगे. Okay, so you're going to hear the new mantra eagle plus, double eagle, ruby. So that is the mindset of the process. Thank you very much.